So this is our second session of permutations and combinations. First, we will revise the addition formula. If you remember, if the digits are A, B, C, D, and the question is find sum of all numbers that can be formed with A, B, C, D without repetition. So the formula would look like there are 4 digits. So 4 minus 1 factorial into addition of digits into 1111. If it was with repetition, it will look like 4 to the power 3 into A plus B plus C plus D with 1111. I hope you remember this. We had covered the derivation as well. I had shown derivation with 1, 2, 3, 4 as numbers. We fix one of the numbers. If I fix 1 here, in how many ways can I fill these? With repetition, I can fill them in 4, 4, 4 ways, hence 4 cube. Here, in how many ways can I fill others? I can fill others in 3 ways, 2 ways, and 1 ways. So that is 3 factorial, hence 1 factorial less. If you remember, this is what we have covered earlier in the previous session. Moving on. So first question is on the screen. Give it a try. Take 2 minutes. I told you exception is 0. So I want to see how you handle 0. Go on, try. Comment your answers. It's a theta problem. Comment your answers. See, if I only want addition of numbers without repetitions, the formula would be there are 4 numbers. So 3 factorial into 0 plus 4 plus 5 plus 6 multiplied by 1, 1, 1, 1. Some of these numbers will begin with 0. Some of these numbers will begin with 0. So I need to subtract those numbers. If these numbers begin with 0, the other numbers are 4, 5, 6. How many numbers can you form with 4, 5, 6? Occupying 3 positions. 2 factorial into 4, 5, 6 bracket 1, 1, 1. ये आपका आंसर है. This is your answer.
whatever you can take common, take it common and then solve. 4 plus 5 plus 6, 15. This is 15. I have taken 15 common. This is 6 into 1, 1, 1. So 6, 6, 6, 6 minus. This is what? This is 2. So this multiplied becomes 2, 2, 2. So your answer turns out to be 15 multiplied by 6, 4, 4, 4. Observe what problem does 0 represent? When 0 becomes the first number, it is no longer a 4-digit number. So you and I need to subtract that. We need to subtract those numbers in which 0 is the first place. 0 is the thousands position. We need to remove these numbers. So once you put 0 in the first position, you are working with 3 digits. तो 3 digits से क्या number बनेंगे? 2 factorial, 1 factorial less. Then 4, 5, 6 bracket 1, 1, 1. Comment if you understood this. Comment you are able to keep up with this. Mistake समझा आपने को? Are we able to understand कहाँ गलती हुई है? Correct that mistake. Moving on. Answer would be, I guess, 9,660. Just confirm my calculation. 9,660. Try. Try this. So direct question ये आपने पहले भी बनाया है. We are saying if any digit can be used at most once. अगर यूज होगा तो 1 times होगा, उससे ऊपर नहीं होगा. So how many numbers can be found? So I can have 1 digit number 4. I can have 2 digit numbers 4 into 3. I can have 3 digit numbers 4 into 3 into 2. I can have 4 digit numbers 4 into 3 into 2 into 1. That is 4 plus 12 plus 24 plus 24. Khatam ho gaya question. Total 64 numbers can be created.
Moving on. How many 4-digit numbers which are divisible by 6 can be formed using digits 0, 2, 3, 4, 6 such that no digit is used more than once and 0 does not occur in the leftmost position? This is a question from I think CAT 2018 or 19. It's a theta problem. Try. One observation I can tell you, if you want something to be divisible by 6, it must be divisible by 2, it must be divisible by 3. Divisibility by 3 is about adding digits. Divisibility by 2 is last position must be even. So go on, combine both rules and see what answer you arrive at. It's a theta problem. So अगर आपका random answer आएगा, let us say 78 numbers आ, let us say, वो confidence नहीं आता that my answer is correct or incorrect. That confidence will always be lacking. Complete this, comment your answers. Let us give it a try. Let us give it a try. First thing we are saying is those are going to be 4-digit numbers. 0, 2, 3, 4, and 6. I have been given 1, 2, 3, 4, 5 digits. So I'm focusing first on this rule. Addition of all 5 is 15. Addition of all 5 is 15. If I remove 0, the addition is a multiple of 3. So numbers can be formed with 2, 3, 4, 6. If I remove 3, the addition is 12. So numbers can be formed, I'm removing 3. Numbers can be formed with 0, 2, 4, 6. If I remove 6, numbers can be formed with 0, 2, 3, and 4. Your job is to count 4 digits.
I am thinking reverse. My job is to remove one digit. So now there's a group of four digits. Now I want, it is now any number formed with these is a multiple of 3 already. My job is to make it multiple of 2. So for 2, I need either 2, 4 or 6. How many options did I get? I get 3 options. Let us say this number I have used. I've used this. अब बाकी सारे कैसे भी arrange हो, I don't care. 3 factorial into 3, this is 6 into 3. 18 numbers can be formed like this. Now, 0 is always a tricky case. If 0 has been put here, others can be arranged in 3 factorial ways. 6 numbers. If 0 is not put here, numbers are either 2, 4 or 6. Numbers are either 2, 4 or 6. I have used 3 options. Let us say this is gone. 0 cannot come here. 0 cannot come here. It can be either 2, 4. So I have 2 options. Let us say 2 has been used. Now others can be anywhere. So what is 2 into 2 factorial? 4. 4 into 3? 12 numbers. There are 12 numbers like this. Now again, 0 is a tricky customer. Keep 0 in the first place, unit place. The others can be anywhere. 3 factorial. So 6 numbers. Now if 0 is not used, it can be either 2 or 4. I have got 2 options. 0 cannot be here. Let us say 2 has been used. So I have got 3, 4. I have got 2 options. Others could be anywhere, which is 2 factorial. So 2 into 2 into 2 is 8. Take your time, observe. This is the kind of effort you have to apply to manually solve this. What should my answer be? My answer should be 18 plus 12, 30 plus 6, 36, 36 plus 6, 42, 42 plus 8, 50. The final answer should be there are 50 such numbers. Go step by step. हमने 3 का condition पहले क्यों handle किया? Because 3 says addition of digits must be divisible. ये थोड़ा difficult है handle करना, तो उसको पहले handle कर लो. Divisibility by 3. So my job was to reject one of these values. इनमें से किसी एक को मुझे reject करना पड़ेगा. Confirmation on this? समझा आपने को? Comment done. Why 0 a tricky number? पहली पोजीशन में आ गया. It is no longer a 4-digit number. तो 0 को फिक्स करके अलग केस बनाओ, 0 को फ्री करके अलग केस बनाओ, and it is easier to add. Confirm this is clear. Comment done. Try this.
So think in this manner. There are 8 distinct fruits, including pear, apple, cherry, to be kept in a row such that pear always comes before apple, apple always comes before cherry. Let us say I was not aware of this condition. I was not aware of this condition. There are 8 things, 8 distinct fruits. I can arrange them in 8 factorial. Now it does not matter where. Let us say this is apple, this is cherry, this is pear. Where these are doesn't matter. Another arrangement could have been, or another could have been cherry, pear, apple. So three things can be arranged. Three things can be arranged in 3 factorial. But I don't want them to be arranged. I always want pear to come first, then apple, and then cherry. I want it to be a fixed outcome. So out of 3 factorial, only one is correct. This is total number of arrangements. Out of 3 factorial, one is correct. So your answer would be this. It can be reframed in many different ways. I could use another way of rephrasing the language. Think over this. There are eight students appearing in exam. In how many ways can you assign them ranks 1 to 8 such that Chintu always comes before Bina, always comes before Bikash. Chintu should come before Bina, Bina should come before Bikash. So these three can always be arranged in one way out of 3 factorial. Your answer would remain same. If you are not confident about the answer, I can derive it in a different manner. If you want me to derive this in a different manner, I can do that. I can match the answer, but this is the safest way and the fastest way. Out of 8, there are 3 which are the cause of concern. For those 3, arrangements are 3 factorial. But out of those, I only want 1 to be the correct way. So 1 by 3 factorial into 8 factorial is the answer. Let me prove this to you in a different manner. Let us say other than these 3, the fruits are banana, orange, grape, a single grape. Let me think of 2 more. Anything seasonal? Guava and custard apple. So there are 5 fruits. Now imagine these 3 have represented some condition. I'm not worried about these 3. I'm keeping them aside. Focus on these 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I ask banana take a position. So banana has got 8 options. Let us say banana comes here. Orange has got 7 options. Orange comes here. Grape has got 6 options. Let us say grape is here. Guava has got 5 options. Let us say guava is here. This was custard apple. Custard apple has got 4 options. Let us say this is custard apple. Now, do you understand? There will always be 3 empty places once you arrange these 5. And once you arrange these 5, others are fixed. You always wanted pear in the first, pear before apple, apple before cherry. So how many arrangements are there? 8 into 7 into 6 into 5 into 4. What is missing? If I have 3 to 1 upon 3 to 1, I will have 8 factorial above and 3 factorial below, which is same. ये थोड़ा मैनुअल हो गया, ये थोड़ा लॉजिक बेस्ड हो गया. ऑब्जर्व बोथ, लर्न बोथ. क्या पता कैट में कस्टमाइज करना पड़ जाए इस तरीके से, who knows.
Moving on. Try this. Be quick about it. So see, in this case, you have to arrange 5 boys and 5 girls around a circular table. No two boys sit adjacent. So many people, they visualize 10 chairs. Don't do that. आप केवल 5 चेयर विजुलाइज करो. You visualize only 5 chairs. These are for girls. So forget there are boys. Arrange 5 girls. 5 girls can be arranged in 4 factorial ways. So these positions have been occupied by girls. Now do you see boys will come in between because boys cannot be adjacent, boys will come in between. So how many places do these boys have? 5 places. But can I say this position has a definition? It is between G1 and G5. This position is between G2 and G3. So positions have a name now. Positions have a distinction. So for boys, it will not be 4 factorial. For boys, it will be 5 factorial. This is for girls because girls were arranged first, and this is for boys. Boys were arranged later on. Condition किस पे थी? Boys पे. Boys should not be together. Boys should not be adjacent. So we first arrange girls. Girls will occupy 5 places. That will take us 4 factorial ways. 4 factorial ways. Now when boys are being seated, अब जगह का distinction है. See, if places were identical, अगर places एक जैसे होते, if they were all identical, तो first boy will feel this are all same. But because there are people arranged already, there is a person girl 1 and girl 2 here. This place is not same as the other 2 places, other 3 places. They are all distinct. सीधा factorial लग जाएगा. Take your time, comment your answers, observe, correct your answers. We'll move on to the next question. Try. How many 4-digit palindromes can be created?
a digit can be used more than once. Obviously बात है. A palindrome is what? 1, 2, 2, 1. You can read from this side will be same. तो repeat तो होना ही है. Repeat तो होना ही है digit. It could be 2, 2, 2, 2. It could be 3, 2, 3, 2, something like this. So go on. How many palindromes can you form? With digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, there must be 4-digit palindromes. अभी CAT के हिसाब से they might ask you for addition as well. So because I'm looking for 4-digit numbers, this place can never be 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो आगे 0 हो जाएगा. It is no longer 4-digit. So I have got 6 options. I have got 6 options. Anyone can come. अब ये use होने के बाद भी it can be any number. It can be any number here. It can be any number. So it can be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 7 options. So अब ये दोनों फिक्स हो गए, तो ये दोनों फिक्स हो गए. यहाँ पे ऑप्शन गिनने नहीं है आपको. Whatever number comes, let us say the number is 4, it will be here. तो यहाँ पर आपको चूज नहीं करना है. While creating palindrome, आपको आधा नंबर ही चूज करना है. Why did we start from right side? Because of 0. 0 is a problem number. So 7 into 6 options multiply करते हैं. There are 42 options. Done. There are 42 palindromes. Done. Moving on. Confirmation on this? So this is fairly straightforward. We have done such questions. अभी आगे बढ़ते हैं इनसे. 4 numbers हैं, 4 digit बना के उनको add करना है. I can use only digit exactly once. एक ही बार इस्तेमाल कर सकता हूं मैं हर digit को. So this will be, let us say, 3 factorial into 1 plus 2 plus 3 plus 4 into 1, 1, 1, 1. तो ये आपका आंसर आ गया. We have done 3 questions like this. It's a formula based question. Moving on. Now, what are combinations? When do we use combinations? What is the formula? What tricks can you remember for combinations?
combinations are used for selections. If I say I have got 5 people, A, B, C, D, E, I have to select any 2 people, any 2. How can I go about this? I might select AB, I might select AC, AD, AE, or I might select BC, BD, BE, or I might select CD, CE, or DE. So out of 5, selecting 2. Out of 5, selecting 2. How many ways do I have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Will I be able to perform this when I have 20 people? When I have 50 people, will I be able to do this? No. So there must be a pattern, there must be a formula. Formula goes in this manner. Out of n people, you are trying to select R. Out of n people, you are combining R people. So R should always be less than or equal to n. आप 5 लोगों में से 8 तो select नहीं कर सकते, तो number of selection should be less than number of people or options available. The formula is n factorial upon n minus r factorial into r factorial. Out of 5 people, I am selecting 2. I am combining 2. 5 combination 2. So 5 factorial upon 2 factorial into 3 factorial. So 5 factorial is 120, 2 factorial is 2, 3 factorial is 6, which is 120 by 12, which is 10. So our answer matches with the manual approach. ये दिखाया जाता है ताकि आपका विश्वास बैठे इस फॉर्मूले में, आगे से सिलेक्शंस ऐसे ही करने हैं. There's a way to calculate this faster. अभी आपको मैं दिखाऊंगा. आपसे कोई बोले 10 में से 7 को select करो, तो what you should be doing is 10 factorial upon 7 factorial into 3 factorial, which is 10, 8, 9. 10, 8, 9 के बाद क्या आएगा? 7, 6, 5, 4, 3, which is 7 factorial. Numbers में मैंने पढ़ा है 7 factorial and 3 factorial is 3, 2, 1. तो ये break हो गया. देखो फॉर्मूला नहीं बनाना है, ऑब्जर्वेशन है ये. I'll teach this to you in more ways. Cancel 3 times, cancel 4 times, 120 is the answer. यहाँ हमने क्या किया था? हर एक चीज कैलकुलेट करी थी. These are small factorials. अभी 10 factorial कौन कैलकुलेट करेगा? So I'm going to show you how to calculate this faster. पहले आप लिख लो इस चीज को. Guys, confirm. Have you taken this down? Have you copied this down? Confirm. Chalo. So a few properties I would like you to understand and observe. If I give you 5 people, 5. If I ask you to perform a selection on 2, can I think reverse and say you are rejecting the other 3?
So either out of 5 you select 2 or out of 5 you reject 3, it should be same. कभी कोई मुझसे कहता है out of 10 आप 7 select करके दो, I'll say 10 select करने के बजाय why don't you reject 3? If somebody says out of 15 आप मुझे let us say 13 select करके दो, I will say why don't you reject 2 out of it? What I am trying to teach you here is फॉर्मूले पे ध्यान मत दो, ऑब्जर्व करो. NCR would be same as NCN minus R. अभी ऐसे क्वेश्चन पहले कैट में आ रखे हैं. They'll ask you for what is N or what is some other value. आपसे बोलेंगे let us say NC10 is equal to NC5. Can you find NC4? Can you calculate this? अब जैसे आप देखो 10 को रिजेक्ट करना 5 को सेलेक्ट करने के बराबर है, तो n मस्ट बी 15 ऐसा. सो सेलेक्टिंग R और रिजेक्टिंग अदर शुड बी सेम. अब इसका क्या फायदा है, देखो एक बार आपने नीचे का नंबर जो वो छोटा कर दिया, ये नीचे का नंबर जो छोटा कर दिया आपने, कितने नंबर नीचे 2, तो आपको केवल 5 into 4 लिखना है, 2 नंबर्स, और नीचे 2 into 1, दिस इज 10. आपने नीचे 7 की जगह क्या कर दिया 3, तो 3 नंबर लिखने आपको ऊपर, 10 9 8 अपॉन 3 2 1, कैंसिल कैंसिल, 3 times 4 times दैट इज 120. आपने फिर 13 की जगह 2 कर दिया, यहाँ पे लोअर वैल्यू 2 नंबर लिखने हैं, 15 into 14 by 2 into 1 7 105. कुछ रिजल्ट आप लिख लो अगर आपको चाहिए, इट विल बी यूजफुल टू यू. सबको सेलेक्ट करना या किसी को सेलेक्ट नहीं करना, देयर इज वन वे. किसी एक को सेलेक्ट करना या n-1 को रिजेक्ट करना, देयर आर n नंबर ऑफ वेज. ये याद कर लो, बड़ी इजी चीजें हैं, बाकी तो आप कैलकुलेट कर लोगे. जनरल फॉर्मूले बना बना के मैं कितना दूंगा आपको मैं. फोकस ऑन द अप्रोच, लेस ऑन द फॉर्मूला, बट फिर भी आपको चाहिए तो ये 6 वैल्यूज लिख लो, ये काम आती रहेंगी आपको. Selecting R people or rejecting others should be same. Comment done. What was the example here? NC10 is given equal to NC5. फिर उस पर क्वेश्चन पूछेंगे जहां पे n का रिक्वायरमेंट है. So n must be equal to addition of both. Selecting 10 or rejecting 5 is same. So total number of people is always selection plus rejection is always total number of people. Moving on. Now what are permutations? I'll teach you the formula. I'll tell you कहां से आया. Permutations are selections followed by arrangements. Selections plus
arrangements are permutations. What it means is, if I tell you I have got, let us say I have got 8 people, A, B, C, D, E, F, G, and H. My job is to arrange these 8 people, arrange 3 out of 8 people in these chairs, chair 1, chair 2, and chair 3. So what I will do is, out of these 8, I will perform a permutation of 3. Now permutation is n factorial upon the difference 5 factorial. ये आपका आंसर है. What is the formula of permutation? The formula of permutation is NPR, which is n factorial upon n minus r factorial. So here please observe and understand. ये किधर से आया? I said permutations are selections and arrangements. So what is selection? Out of n selecting r. What is arrangement? R factorial. So if you notice here, this is n factorial upon n minus r factorial into r factorial into r factorial. So try to understand, this is basically permutation. So I feel permutations are slightly less useful because I can achieve the same result by, I'll say, applying combinations and arrangements, or I can apply counting also. What is this? This is 8 into 7 into 6 into 5 factorial, 5 factorial. So 876 is the answer. A, B, C, D, E, F, G. There are 8 options for this position. There are 7 options. There are 6 options. So permutations, I feel, are slightly less useful in solving questions. Combination plus arrangement should give you the answer, or सीधा आप किस पे चले जाओ, counting पे चले जाओ. So what is formula for permutation? N factorial upon n minus r factorial. किधर से आता है? Combinations multiplied by arrangements. Small example. ज्यादा लोग हैं, कम कुर्सियां, उल्टा होता. Let us say it was reverse. I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I have 8 chairs and I have 3 people. Ronnie, Ammu, and Tony. In how many ways can I put these 3 people on these 8 chairs? Whether chairs are more or people are more makes no difference. Formula would be same. 8p3. Done. Guys, confirm done. Basic formula, nothing heavy. What are permutations? What are combinations? Now, permutations and combinations are created only when objects are distinct. So permutations and combinations fail if I ask you there is A, B, B, C, D, E, E, E. If I ask you in how many ways can you select 4 objects? Four alphabets. You cannot apply combination, you cannot apply permutation. Permutations and combinations fail if any of the objects start to repeat or are same. Permutations and combinations do not work on same objects or repeated objects. ये कहीं मेंशन कर लो. इसके ऊपर भी क्वेश्चन I'll show you. Couple of questions I'll show you.
Permutations and combinations do not work when objects are repeated or are same. Moving on, shall try. Very easy questions. First 3-4 questions are direct application of formula. Start. आपको आंसर कॉम्बिनेशन में देना, आई एम फाइन. आपको डिजिट में आंसर देना, आई एम फाइन. Totally up to you. Start. Comment answers, guys. Can't see any answers. The question says there are how many different ways can 8 players be selected from 11 if 2 players are always selected? Let us say those 2 players are Kohli and Rohit, they're always there. So out of 8, there is requirement of 6. Out of 11, there are 9 options available. So that's your answer. You want answer in digits? 9C3, 9, 8, 7, 3, 2, 1. 84 ways. What does question B say? 2 players are never selected. Let us not name anyone. Let us say these 2 players are not very strong players. They are never selected. So you still need 8 people. You still need 8 people. Out of 11, 2 options are gone. So remaining are 9 options. 9C8 is like 9C1 is like 9 ways. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ नहीं करना, कोई हाई लेवल कॉन्सेप्ट नहीं है. 2 आर ऑलवेज सेलेक्टेड, तो आपकी रिक्वायरमेंट 6 की है. आपके पास 11 लोग थे, 2 आर ऑलवेज सेलेक्टेड, तो यू हैव रिमेनिंग 9 ऑप्शंस. तो 9C6 कैलकुलेट हो गया 9C3 के थ्रू. 2 players are never selected, तो आपकी रिक्वायरमेंट अभी भी 8 की. यू स्टिल नीड 8 people, 8 players. Out of 11, 2 are gone, so options are 9. Try this. Out of 5 men, 6 women, in how many ways can a committee of 3 men and 2 women be selected? सीधा ये men कहाँ से select होंगे? ये 5 में से, तो 5 combination 3.
ये 2 वुमेन कहां से सेलेक्ट होंगे? फ्रॉम दीज वुमेन। आपको मैन एंड वुमेन चाहिए तो दोनों मल्टीप्लाई होगा, दैट्स ऑल। ये 5c2 के बराबर है और ये 6c2 ऑलरेडी है, which is 5 into 4 upon 2 into 1, which is 6 into 5 upon 2 into 1. 2 into 2, 4 cancel. 5 into 6, 30. 30 into 5, 150. You can maintain speed like this. See the application of combination, nothing heavy. अभी आगे distribution theorem आएगा, वहां पे heavy application होगा. Is this example clear? Confirmation on this? Moving on. Try this. ये आप ट्राई करोगे. अभी एटलीस्ट वाले क्वेश्चंस आ गए, तो हाउ टू हैंडल दिस. क्या क्वेश्चन है? There are 6 men, 5 women. In how many ways can a committee of 5 be formed having at least 3 members as men? How much is the committee? 5 members. At least 3 are men. So you create cases. There are 3 men. There are 2 women. There are 4 men. There is 1 woman. There are 5 men. There is no woman. So you have to create cases. Now, where will these 3 come from? 6 men. These 2 will come from 5 women. ऐसा either this can happen or this can happen. ऐसा. You have to add cases. Now I've performed combinations so many times. इनमें से कई सारे वाले तो मुझे याद हो गए हैं. This is 15, 10. This is 6 into 5 by 2 into 1. This is again 15. 62, no 62. 6 into 5 by 2 into 1. This is 5. And this is 6 into 1. मैंने कहा था ना NC0 is always 1. Addition of these. This is 150 plus 75 plus 6, which is 81. So 231 ways are there. Confirm and verify my calculations. 654 is 20. This is 200. तो मेरा वैल्यू 50 से बढ़ जाएगा. 281 is the answer. 281 is the answer. Go on, confirm calculations. Let me know if this is clear for you.
Done. Moving on. Confirmation on this. Try. Very straightforward. You have 1 minute. You have 1 minute. क्या कह रहे हैं? There are 5 men and 6 women. कमिटी में 3 men और 2 women चाहिए. रोहन एंड सीमा आर नेवर सेलेक्टेड. अगर ये कभी सेलेक्ट नहीं होंगे तो आपका ऑप्शन कम हो गया. आपकी रिक्वायरमेंट तो उतनी ही है, 4c3 इंटू 5c2 विच इज 4 इंटू 10 40 वेज. जो लोग कभी सेलेक्ट नहीं होंगे वो आपके ऑप्शन से बाहर हो गए. आपकी रिक्वायरमेंट डिड नॉट चेंज. योर रिक्वायरमेंट इज स्टिल 3 and 2. Moving on. Try this. तो बेटा ये क्वेश्चन आपने पहले बनाए हैं. प्रेसिडेंट, वाई प्रेसिडेंट, चाय वाला चाहिए. तो 8p3. 8p3 is 8 factorial by 5 factorial, which is basically 876 upon 5 into 5 factorial. Cancel. This is what 56 into 6 336. ये सेम क्वेश्चन आपने बनाया है. I only wanted you guys to use the formula. 3 लोगों को 8 में से 3 लोगों को पोजीशंस देने हैं. सेलेक्ट करके पोजीशन देना है. दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन. 8 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करके पोजीशन देनी है. So you have solved this question earlier as a counting question. Abhi you are using a formula. Try this. You will need more time than you presume. Take 3 to 4 minutes. Try this.
मैंने आपसे कहा था डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं काम करता परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस का जब डिजिट्स रिपीट करते हैं, अल्फा डिजिट रिपीट करते हैं. तो आई हैव टू फॉर्म अ 4-letter वर्ड. हाउ मेनी 4-letter वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद अल्फाबेट्स टेकन फ्रॉम वर्ड असैसिनेशन. इसमें क्या करना है आपको, देखो ए 3 बार है, एस 1 2 3 4 4 बार एस है, आई 2 बार है, एन 2 बार है, टी 1 बार और ओ 1 बार. दैट इज एन असैसिनेशन. और जब आप वर्ड्स बनाओगे 4-letter वर्ड्स अब बनाओगे, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी दैट ऑल 4 आर डिफरेंट. जो 4 अल्फाबेट आपके होंगे, 4 डिफरेंट अल्फाबेट्स. ये हो सकता है, अब आप ऐसा करो, 2 सेम अल्फाबेट हो और 2 डिफरेंट अल्फाबेट हो. आप ये भी कर सकते हो कि 3 अल्फाबेट्स आर सेम and 1 is different. You might be able to achieve this with all 4 being same. देखो अगर चारों के चारों सेम है अल्फाबेट, there is only one possibility, S S S S S. There is only one possibility, one way. अब थोड़ा ध्यान सुनना, when you are saying 3 of them are same, it can be either A or it can be S S S S. अब अगर ये तीनों सेम है तो अगला ऑप्शन क्या होगा, लैंग्वेज पे ध्यान देना, अगला ऑप्शन क्या होगा, 1 2 3 4 5. इन पांचों में से कोई भी एक आ सकता है. इट कैन बी आइदर S और इट कैन बी I और इट कैन बी N और T और O. 5 ऑप्शन है. अब आपको अरेंज भी तो करना पड़ेगा. आपके पास क्या है, 3 सेम है और 4 डिफरेंट है. अरेंजमेंट कैसे निकालोगे आप, हाउ विल यू फाइंड अरेंजमेंट. अरेंजमेंट्स विल बी 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल. आपको याद है, जैसे आपके पास आ गया ए आई, तो इसके अरेंजमेंट कितने होंगे, आपको वर्ड्स बनाने हैं ना, वर्ड्स बनाने हैं, तो 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल. अगर आपके पास आ गया ए ओ, वो भी तो इतना ही आएगा. तो आपका आंसर आएगा 5 into 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल. ये ए के लिए है, ऐसा ए के लिए है, ऐसा किसके लिए होगा, एस के लिए भी होगा. 5 into 4 factorial by 3 factorial. So 4 factorial by 3 factorial is 4. 4 into 5 20. ऐसे 20 वर्ड्स बनेंगे और ऐसे भी 20 वर्ड्स बनेंगे. अब आप कह रहे हो 2 of them are same, 2 एक जैसे हैं. तो देखो ये भी 2 ले सकते हो आप, ए और ये और ये और ये. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. What did I say? What did I mean by this? आप ले सकते हो NN. अभी एक और केस बनेगा, इज इट नॉट पॉसिबल कि 2 सेम हो और दूसरे 2 आपस में सेम हो. इसको तो हम भूल ही गए थे. तो दैट इज व्हाई इट्स अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम. आपको सारे केस बनाने पड़ेंगे. अब मैंने कहा 2 आने वाले हैं, तो इट कैन बी आइदर ए और SS और II और NN. 4 ऑप्शन हो गए. अब एक बार आप डिसाइड कर लिया, लेट्स से आप डिसाइड कर लिया ये ए है, ये आपने डिसाइड कर लिया ए. अब आपको 2 डिफरेंट चाहिए, तो वो डिफरेंस कहां से आएंगे, यहां से. उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5. 5 में से आपको 2 सेलेक्ट करने पड़ेंगे. अब अरेंज करोगे, लेट अस से इट इज ए टी एन. आपको अरेंज करना है, तो अरेंजमेंट कितने होंगे इनके, अरेंजमेंट विल बी 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. क्या आंसर आएगा, 4 into what is this, 5C2. 5C2 is 10. This is 24 upon 2 12. तो बेटा ऐसे 480 वर्ड्स बनेंगे, 480 वर्ड्स. आप कह रहे हो ऑल 4 ऑफ देम आर डिफरेंट, ऑल 4 मतलब एक एक आ सकता है. तो मेरे पास 6 ऑप्शंस हैं, 6 में से मुझे 4 को परम्यूटेशन लगाना है. मेरे पास ASINTO 6 ऑप्शन है, 6 में से 4 परम्यूटेशन लगाना है. व्हाट इज दैट, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. व्हाट इज दैट, 720 अपॉन 2. बेटा ऐसे 360 वर्ड होंगे. क्या मिस हो गया था, 2 सेम और 2 सेम. अब आप ये कह रहे हो अब 2 सेम चाहिए, तो इट कैन बी ASS,
इट कैन बी ए आई आई, इट कैन बी ए एन एन। ऐसा करने से अच्छा आपके पास 1 2 3 4 चार ऑप्शन है, इनमें से कोई दो चुन लो। मान लो आपने चुन लिया ए और आई को, तो आपके पास क्या आ गया, ए आई आई आ गया। इनको अरेंज कैसे करेंगे, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ऐसे अरेंज करेंगे। व्हाट इज 4c2, 6 into व्हाट इज दिस 24, 24 अपॉन 4 6, तो ये 36 है। तो आपका आंसर क्या होगा, प्लीज स्लो डाउन, ऑब्जर्व, लर्न। आपका आंसर होगा 360 प्लस 480, तो ये हो गया आपका 840, 840, 840 प्लस 20 प्लस 20, तो 880, 880 प्लस 36, 916 प्लस 1, तो बेटा 917 इज द आंसर। ये काफी इलैबोरेट क्वेश्चन है, काफी डिटेल्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस अभी देखने मिलते हैं हमें कैट में। टेक योर टाइम, लिखो इनको अच्छे से। आराम से देखो, लेट मी नो कोई रिपीट करना है क्या, आई विल नेम देम। ये हमारा स्टेप है 1 2 3 4 एंड 5। इनमें से कोई रिपीट करना है क्या, लेट मी नो। जो पार्ट काम का नहीं है, लेट मी रिमूव दैट फ्रॉम द स्क्रीन। एक बार एडिशन चेक कर लो, एडिशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इट विल कॉस्ट अस वेरी हैवीली। और एक बार हो जाए तो कमेंट डाल। कंफर्मेशन गाइस। गाइस डन, बढ़े आगे इससे।
Try this. क्या क्वेश्चन है? There are 4 married couples in a club. The number of ways of choosing a committee of 3 members so that no couple appears in a committee. Couple कितने हैं? 4. There are 8 people, 4 men, 4 women. आपको कितने members चाहिए? 3. How can you do this so that a couple never appears in the committee? So I can create couple of ways to answer this. I might be able to create couple of ways to reach an answer. देखो, मैं एक मैनुअल तरीका सबसे पहले आपको दिखाता हूँ. मैं आपको 4 मेथड दे सकता हूँ, बट पहले मैनुअल देख लेते हैं. देयर आर men 1, men 2, men 3, men 4. मान लो इनकी वाइव्स के ही नाम हैं, इनके पेयर के ही नाम है woman 1, woman 2, woman 3 एंड woman 4. अब वो फालतू वाली बातें मत करना कि कपल है तो सर मैन भी तो हो सकता है, वुमेन भी तो हो सकता है. इट्स अ थियोरेटिकल प्रॉब्लम. आप ऐसे क्वेश्चन किसी लिबरल कॉलेज में जाके फ्रेम करना. तो अभी हमें क्या चाहिए? 3 मेंबर कमिटी. कैन आई से अगर मैं इन 4 में से 3 मेन सेलेक्ट कर लूं या इन 4 में से 3 वुमेन सेलेक्ट कर लूं तो कपल तो कभी नहीं आएगा. अब दूसरा ऑप्शन है, मैंने 2 मेन और 1 वुमेन सेलेक्ट किया. लेट अस से मैंने यहां से 2 मेन सेलेक्ट किए. मान लो ये 2 सेलेक्ट हो गए. अब ये इनकी वाइफ रिजेक्ट हो गई. अब इनमें से कोई सेलेक्ट होगा. आई विल सेलेक्ट फ्रॉम द अदर 2. ऐसा. या फिर आई सेलेक्ट 2 वुमेन एंड 1 मैन. सपोज करो ये 2 वुमेन सेलेक्ट हो गई 4C2. उनके हस्बैंड बाहर हो गए. बचे हुए 2 में से कोई एक सेलेक्ट कर लो. सो दिस इज योर आंसर. तीनों मेन, तीनों वुमेन, कपल नहीं आ सकता. 2 मेन 1 वुमेन, मैंने कपल अवॉइड किया है. 2 वुमेन 1 मैन, मैंने कपल अवॉइड किया है. तो अब हम कह रहे हैं 4C3 is 4, 4C3 is 4, 4C2 is 6, 6 into 2 12, 6 into 2 12. तो आपका आंसर आ गया 32. ये मैनुअल तरीका था. इसमें मैंने क्या किया, एक एक केस बना के आपके लिए सॉल्व कर दिया. अब ये सोचो अगर मेरे सामने 3 लोग आने वाले हैं, 3 लोग. अब मैंने इनको इंडिविजुअल नहीं देख रहा. मैन वुमेन 1 1, मैन वुमेन 2 2, मैन 3 वुमेन 3, मैन 4 वुमेन 4. थोड़ा अलग तरह की सोच है, ध्यान देना. मैं इनको ऐसे कपल 1, कपल 2, कपल 3, कपल 4 ढूंढ रहा हूं, देख रहा हूं. मैं कह रहा हूं अगर मेरे को 3 लोग चाहिए तो इन 4 में से कोई 3 कपल सेलेक्ट कर लो. मान लो ये कपल सेलेक्ट हो गया, ये कपल और ये कपल सेलेक्ट हो गया. कपल ही सेलेक्ट हो गया सीधा. अब कहना इसे कि कपल सेलेक्ट हो गया, इन दोनों में से कोई एक आएगा, मैन और वुमेन. देयर आर 2 ऑप्शंस. इन दोनों में से कोई एक आएगा, मैन और वुमेन. देयर आर 2 ऑप्शंस. इनमें से कोई एक आएगा, मैन और वुमेन. देयर आर 2 ऑप्शंस.
What is 4C3? 4C3 is 4 into 2 8 into 2 16 into 2 32. तो ये काफी ज्यादा लॉजिकल अप्रोच है और काफी एडवांस अप्रोच है, ये सीखो, ये मैनुअल अप्रोच है, कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा, कोई दिमाग नहीं काम कर रहा आपका, कुछ नहीं क्लिक कर रहा. गो फॉर दिस. थोड़ा फ्री माइंड है आपका, लॉजिक सोचो. आप जिन 3 लोगों को सेलेक्ट करोगे वो हैं तो किसी न किसी कपल में से ही, तो आप उल्टा सोचो, आप 4 में से 3 कपल सेलेक्ट कर लो. अब एक बार वो 3 कपल सेलेक्ट हो गए तो आपका इसका ऑप्शन है मेन वुमेन मेन वुमेन मेन वन, कोई एक आएगा. देयर आर टू ऑप्शंस, टू ऑप्शन, टू ऑप्शंस. और तरीके बना सकते हैं, अगर आप पूछे तो और तरीके बना सकते हैं इसके. इतना लिख लो, कमेंट करो, डन. Guys, confirm both methods are clear. Moving on. Chalo, try this. India and England play one day international cricket series until one team wins 4 matches. No match ends in a draw. Find in how many ways can the series be won. फिर से एक बात सुनो और समझो.
जब तक एक टीम 4 मैच नहीं जीत लेती सीरीज चलेगी। ये नहीं बताया है हाउ मेनी मैचेस आर देयर इन द सीरीज। प्लीज लर्न टू आइडेंटिफाई दिस। India and England play one-day international cricket series until one team wins 4 matches. No match ends in a draw. Find how many ways can series be won. अब विनिंग तो इंडिया की भी हो सकती है और इंग्लैंड की भी हो सकती है। अगर मैं इंडिया का आंसर कैलकुलेट कर लूं उतना ही इंग्लैंड के लिए भी होगा, बिकॉज इट्स सिमेट्रिक क्वेश्चन। इंडिया जीते चाहे इंग्लैंड, 4 मैच जिताने हैं। तो मैं केसेस बना रहा हूं। क्या हो सकता है कि 4 मैच खेले और चारों इंडिया जीत गए, दैट इज वन वे। ये हो सकता है इंडिया ने 4 मैच जीते, जो ध्यान सुनना, अच्छे समझना, आखिरी मैच इंडिया ने जीता, चौथा मैच, उससे पहले इंग्लैंड ने एक मैच जीता। तो इनको आप कैसे भी रीअरेंज करो, कैसे भी, क्योंकि चौथा मैच जीतते ही इंडिया जीत जाएगा, तो ये रीअरेंज सकते हैं। इनको रीअरेंज करने के वेज क्या हैं? 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, विच इज 4 वेज। क्यों रीअरेंज करवा रहा हूं मैं आपसे? अगर इंडिया का मैच इससे पहले जीत गया तो इंग्लैंड जीत नहीं पाएगा ना। तो चौथा मैच इंडिया को जिताया मैंने, आई। और क्या तरीके हैं? फिर से मैंने आखिरी मैच इंडिया को जिता दिया। हो सकता है इंडिया ने 3 मैच जीते हों और इंग्लैंड ने 2 जीते हों, ये भी तो हो सकता है। इनको आप रीअरेंज कर सकते हो, ये फाइनल विनिंग है। चौथा, इनको कैसे रीअरेंज करेंगे? 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 120 बाय 6 इंटू 2, 10 वेज। इंडिया का मैच आखिरी में जीते, ये चौथा मैच है इंडिया का, मतलब इससे पहले 3 विनिंग होंगे, इंडिया इंडिया इंडिया। ये भी हो सकता है इंग्लैंड के 3 विनिंग्स हो इससे पहले। इनको अरेंज करने का तरीका क्या होगा? 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, विच इज 720 बाय 6 इंटू 6, 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6, विच इज 20। तो इंडिया के जीतने के वेज हैं, टेक योर टाइम, स्लो डाउन, समझो। चौथा मैच जीते इंडिया जीत जाएगा। इंडिया के जीतने के वेज हैं 1 + 4 + 10 + 20, विच इज 35 वेज हैं इंडिया के जीतने के। तो अगर इंडिया के 35 हैं तो इंग्लैंड के भी 35 होंगे। तो हाउ मेनी वेज कैन द सीरीज बी प्लेड? 70 वेज। The series can be played in 70 ways. Take your time, write it down, observe. Guys, take your time, copy this down, confirm ये click करा तो we'll move on.
So same question I think has been rearranged here. Now we are going for arrangements on a different geometric figure. Arrangements on a different geometric figure. So I want you guys to learn this through observation. Don't try to create formulas. Market में कुछ formula बने हैं इनके लिए, don't do that. I am going for arrangements on a triangle. If I give you a triangle, it has equal sides. Everything is identical. If I put 3 chairs on each side, if I put 3 chairs on each side, so how many people do I have? I have 9 people. In how many ways can I arrange 9 people here? थोड़ा सा ध्यान देना. Let us say those are A, B, C, D, E, F, G, H, I and J. J 10 हो जाएगा. I तक है. आपके 9 लोग हैं I तक. क्या बोलेंगे? All the chairs are same, equally spaced and triangle also has equal sides. So they are symmetric. Let us say मैंने A को बोला अपनी जगह ले ले. तो ध्यान से सुनना. When A comes here, what will A say or A notice? कि मेरे वाले साइड पे 3 पोजीशंस, मेरे राइट साइड में 3, मेरे लेफ्ट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में 3 प्लेसेस. जब ए इधर आएगा तो व्हाट ए विल से, मेरे सामने 3, राइट में 3, लेफ्ट में 3. ए इधर आएगा, ए विल से द सेम थिंग. सो व्हाट ए विल फील, व्हाट फीलिंग विल ए गेट इज ऑल साइड्स आर सेम. ए विल फील सारे साइड एक जैसे हैं मेरे, ऑल साइड्स आर सेम. पहले पर्सन को ऐसा लगेगा. लेट अस से ए यहां बैठ गया, उसको अच्छे वाइब्स आ रहे थे, ही वाज फीलिंग गुड, यहां बैठ गया. अब ये क्या है? ए का इमीडिएट राइट, ए का सेकंड राइट, ए का थर्ड राइट. एक बार ए बैठ गया, एक बार ए बैठ गया तो इन सबको ऑप्शंस मिल जाएंगे. लेकिन अभी देखो ए ने कहा मैं इधर बैठूंगा, इधर बैठूंगा. तो ए इज लुकिंग एट हाउ मेनी पोजीशंस? एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट एंड मिडिल. तो पहले पर्सन के 3 ऑप्शंस. एक बार जगह सेलेक्ट कर ली तो 3 ऑप्शंस. अब बाकी 8 लोग हैं, जैसे बी को भेजूंगा तो बी के पास होगा फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट. तो बी के पास 8 ऑप्शन, फिर 7 ऑप्शन, फिर 6 ऑप्शन, सीधा 8 फैक्टोरियल. तो लोगों ने इसके फॉर्मूले बना दिए. फॉर्मूले मत बनाओ, ऑब्जर्वेशन लगाओ. लेट अस से ये ट्राइंगल में ऐसा होता है डायग्राम, 1 2 1 2 1 2, 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं. जब ए बैठने जाएगा तो ए इधर आए चाहे इधर आए चाहे इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन ए ने कह दिया मैं इधर बैठूंगा. अब ए के पास कितने ऑप्शंस हैं? 2. एक बार ए बैठ गया तो बाकी 7 फैक्टोरियल. ऐसा, दिस इज योर आंसर. तो बाकी 5 फैक्टोरियल, बाकी 5 फैक्टोरियल. अब इसका एक्सेप्शन भी आप समझो. अगर एक भी रीजन है नॉन सिमेट्री का, लेट अस से 1 2 3 1 2 1 2 3, देयर इज रीजन फॉर नॉन सिमेट्री. यहां पर 2 जगह या 3 जगह नॉन सिमेट्री. कितने लोग हैं? 8 लोग. सीधा 8 फैक्टोरियल आएगा. इफ देयर इज अ रीजन फॉर नॉन सिमेट्री, सीधा फैक्टर लगा दो, आपका आंसर रेडी है. राइट ऑन दिस एग्जांपल्स. क्या सेंटेंस है, क्या लैंग्वेज है? फर्स्ट पर्सन फील्स ऑल साइड्स आर सेम. तो साइड नहीं देख रहे हैं, उस साइड में जगह कितनी है वो देख रहे हैं. फर्स्ट पर्सन फील्स ऑल साइड्स आर सेम. Confirm you're able to keep up with this. Confirm, done, we'll move on.
अभी रेक्टेंगल में क्या फर्क होता है? द साइड्स आर नॉट इक्वल। तो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं? लेट अस से there are 2 places here, there are 3 places here, 3 places here, 2 places here. There are 10 places, A, B, C, D, I, 10 people. तो क्या होगा? देखो बेसिकली A यहां पर आएगा तो A बोलेगा मेरे सामने 3 प्लेस, राइट में 2, लेफ्ट में 2। जब A यहां पर आएगा तो A विल से द सेम थिंग, मेरे सामने 3 प्लेस, राइट में 2, लेफ्ट में 2। तो A को लगेगा ये और ये दो साइड सेम है। तो A के पास बेसिकली ऑप्शन क्या है? गो ऑन अ लॉन्गर साइड और गो ऑन अ शॉर्टर साइड। अगर लॉन्गर पे जाता है तो A के पास कितने ऑप्शन है? लेफ्ट, मिडिल एंड राइट। और मींस अल्टरनेट। शॉर्टर पे जाता है तो कितने साइड है? लेफ्ट और राइट, 2। तो पहले पर्सन को 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक बार पहला पर्सन बैठ गया आपका, लेट अस से A यहां डेरा डाल के बैठ गया यहाँ पे। अब ये A का लेफ्ट है, ये राइट है, ये सेकेंड राइट है, तो बाकी कितने लोग बच गए? 9 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर है। दिस इज आंसर। A हैज अ बेसिक ऑप्शन ऑफ लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड। तो एक तरीके से आप समझो, मैं क्वेश्चंस बना बना के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसको एज अ प्योर थ्योरी मत ट्रीट करो, इसको एज एग्जाम्पल ट्रीट करो। अब क्या होगा जब एक इंसान कम हो जाएगा, 2 इंसान कम हो जाएगा, दैट वील सी इन एग्जांपल्स। अभी आप देखो स्क्रीन पे, इसको लिखो, अच्छे से कॉपी करो। इसमें थोड़ा मुश्किल है इस तरह के सवाल बनाना कि नो 2 आर टुगेदर, नो 3 आर टुगेदर, बट बना सकते हैं आप बोलोगे तो। वी कैन क्रिएट सच क्वेश्चंस। क्लियर है? गुड। अब हेक्सागोन सेम बात है, सेम चीज है, नंबर ऑफ प्लेसेस गिन के वैसे बना देंगे, 2 2 3 3 करके। चलो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डी अरेंजमेंट। थोड़ा स्लो डाउन करते हैं, समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूं ये जो 4 घर हैं, ये घर फिक्स हैं। ये A का घर है, ये B का, ये C का, ये D का। लेकिन अगर मैं अरेंजमेंट देखूं, 4 लोगों को 4 जगह अरेंज करना है। देयर आर 24 वेज टोटल अरेंज करने के। 24 वेज है, उनमें से करेक्ट वे एक ही है। द करेक्ट वेज A यहाँ, B यहाँ, C यहाँ, D यहाँ, 1 करेक्ट वे। तो जो बाकी 23 वेज हैं, 23 वेज, उसमें एटलीस्ट 2 पीपल जो हैं वो रॉन्ग प्लेस पे हैं। एक पर्सन कभी नहीं हो सकता रॉन्ग जगह पे। अगर डी रॉन्ग जगह पे, बाकी 3 सही जगह पे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रॉन्ग जगह पे कम से कम 2 लोग होंगे। तो इन 23 वेज कम से कम 2 लोग रॉन्ग जगह पे हैं। ऐसा हो सकता है क्या इन रॉन्ग वाले अरेंजमेंट में? रॉन्ग वाले में ऐसा हो सकता है क्या ए और बी सही जगह पर हो, डी और सी गलत हो? क्या ये हो सकता है ए सही जगह पर हो, बाकी तीनों गलत हो? तो 23 वेज हैं जिसमें कम से कम 2 लोग गलत जगह पे होंगे। अगर क्वेश्चन होता कि ये ए का घर है, ये बी का घर है, लेट मी ड्रॉ दिस प्रॉपरली। घर होता, एनवेलप होता, उनका लॉटरी टिकट होता, उनका सूटकेस, कुछ भी होता, उनका फिक्स होता। ये फिक्स है उनका ए बी सी डी का। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी ways can I arrange A, B, C, D so that all of them go to wrong home? अभी जो आपकी रॉन्ग आंसर थी उसमें आपको दिख रहा है 2 लोग सही जगह पर हैं, एक बंदा सही जगह पर है। ऐसा हो सकता है कोई सही जगह चला गया। मैं नहीं चाहता कोई भी सही जगह जाए,
कोई भी सही जगह ना जाए, इसको बोलते हैं डी अरेंजमेंट। और इसका एक स्टैंडर्ड अप्रोच है। आपको क्या करना है, 4 लोगों को डी अरेंज करना है, 4 लोगों को डी अरेंज करना है। तो 4 फैक्टोरियल इनटू, ये फॉर्मूला है बेटा, इसका थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है लेकिन आपको देखना है तो आई कैन डू इट फॉर यू। ये हो गया 4 लोगों का डी अरेंजमेंट। मैं और एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। जैसे ये होता है 1 बाय 1, 1 बाय 1 तो कैंसिल। ये होता है 24, ये होता है 24 बाय 2, ये होता है 24 बाय 6, ये होता है 24 बाय 24। तो आपका आंसर आ जाएगा 12 माइनस 4 प्लस 1। तो 9 वेज ऐसे हैं जहां पर कोई सही जगह नहीं जाएगा। आप पहले लिख लो। ये मैं क्या कर रहा था, आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि 24 टोटल वेज आती हैं अरेंज करने के, उसमें से एक वे है ऑल करेक्ट, बाकी 23 में कोई तो गलत जगह गया है, कोई तो गया है। बट उस 23 में ये भी हो सकता है ए सही जगह गया, बाकी गलत जगह गए हैं, ए भी सही जगह गए हैं, बाकी 2 गलत जगह हैं। मुझे क्या चाहिए, ऑल ऑफ देम गो टू रॉन्ग प्लेसेस। तो ये तरीका हाईलाइट करो, इट्स अ यूनिक कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट है, डी अरेंजमेंट्स। कंफर्म, डन। और एग्जाम्पल आपको बना के देता हूं, मैं आपको लिखना सिखाता हूं डी अरेंजमेंट कैसे लिखते हैं। तो लेट अस से, आई होप आपने ये लिख लिया है। लेट अस से अब मुझसे कहा जा रहा है कि आप 5 चीजों को डी अरेंज करो। डी अरेंज का मतलब है एवरीथिंग गोज टू द रॉन्ग प्लेस। अभी 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई। ये एक पार्टी में आए और अपने जैकेट्स लेके आए, और ये इतने ड्रंक होके निकले कि सबको गलत जैकेट चला गया। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? तो इसको बोलते हैं डी अरेंजमेंट ऑफ 5, ऐसे लिखा जाएगा। तो कभी भी डी अरेंजमेंट आपको 6 से ऊपर चीजों का नहीं मिल सकता। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। कैट वाले भी क्वेश्चन वहीं तक देंगे जो आपसे हमसे बन पाए। तो देखो, पहले 2 वैल्यू जो 0 फैक्टोरियल है वो 1 है, 1 फैक्टोरियल 1 है। पहले 2 वैल्यू हमेशा कैंसिल होंगे। अब ये क्या, 120, 120 अपॉन 2 60। अब सुनना, अभी जो 60 है, 60 को अपॉन 3 कर दो 20, 20 को अपॉन 4 कर दो 5, 5 को अपॉन 5 कर दो। ये बस सिखाना चाह रहा था मैं। जो मैंने इतना सारा कैलकुलेट किया ना, इससे जल्दी कर सकते हो आप। आप केवल पहली 2 को कैलकुलेट कर लो। कितना है ये, 120 अपॉन 2 60। अभी 60 को डिवाइड करो 3 से 20, 20 को डिवाइड करो 4 से 5, 5 को डिवाइड करो 5 से 1, और बाद में साइन हैंडल कर लो। तो ये कितना है, 65 माइनस 21 44। तो डी अरेंजमेंट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स इज 44। तो मैं ये बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं होगा भी आपको 7 ऑब्जेक्ट्स बोल दिया या 10 ऑब्जेक्ट्स बोल दिया डी अरेंज करने, नहीं हो पाएगा आपसे और हमसे। तो 5 ऑब्जेक्ट 6 ऑब्जेक्ट तक हम कर सकते हैं। अगर कोई मुझसे बोल दे 6 ऑब्जेक्ट को डी अरेंज करो, तो मैं कहूंगा 6 फैक्टोरियल इनटू दिस।
ध्यान से देखो, पहली वैल्यू पॉजिटिव हमेशा होगी, तो ऐसा दिखता है इवन नंबर्स आर पॉजिटिव, ऑड नंबर्स आर नेगेटिव इन द ब्रैकेट। तो ये कितना होता है 720। ये क्या होगा, हमेशा कैंसिल हो जाएगा। 720 अपॉन 2 360, 360 अपॉन 3 120, 120 अपॉन 4 30, 30 अपॉन 5 6, 6 अपॉन 6 1। ये प्लस माइनस, थोड़ा प्लस माइनस देख लेना, मिस्टेक मत करना। 360 प्लस दिस 90, तो 391 माइनस 126, आखिर में 5, 8 माइनस 2 6, 265। तो ये आपका डी अरेंजमेंट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स। क्या ये सब याद करना है? बिल्कुल भी नहीं। एज अ फैकल्टी मेरा जॉब है आपको बेटर मेथड्स देना, तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं कैसे किया जाता है। व्हाट इज डी अरेंजमेंट? नोबडी गेट्स द राइट ऑब्जेक्ट। आप लेटर पोस्ट करने जा रहे हो, आपके 4 फ्रेंड्स हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन यू पुट देम इन एनवेलप्स? नोबडी गेट्स द राइट लेटर, डी अरेंजमेंट। आपने 5 फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट खरीदे, आप उनको कोरियर कर रहे हो, इन हाउ मेनी वेज कैन आई कोरियर दीज गिफ्ट्स सो दैट नोबडी गेट्स द राइट गिफ्ट? इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डी अरेंजमेंट। लिख लो, कमेंट डन। Guys, confirmation on this? Chalo, we'll pick up this new concept tomorrow. On weekends, we will have 4.5 hours of session. I would prefer to complete permutations and combinations by at least this Sunday. Monday onwards we can start with probability and binomial. वो भी एक लेक्चर में आपका हो जाएगा, probability and binomial, क्योंकि probability takes a lot of concepts from PNC. Tomorrow's schedule I will share on the group. Traveling on a grid. Grid में ये फॉर्मूले वाले सवाल है, सीधा फॉर्मूला सिखाऊंगा मैं आपको. Then geometry based PNC, counting grids and so on. We'll pick it up tomorrow.